हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं पूजा मुकुंद जो इस साल की यूपीएससी टॉपर हैं। इन्होंने यूपीएससी 2022 में 390 रैंक को हासिल किया है, जो कि एक बहुत ही मेजर मेजर अचीवमेंट है। कॉन्ग्रेचुलेशंस पूजा एंड वेलकम टू बुक्सतावा। Thank you, sir, and I'm very happy that I'm part of Books Tawati team. या ओके। सो पूजा, लाइक सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब आपने अपना नाम मेरिट लिस्ट में देखा तो व्हाट वाज योर Hmm. फर्स्ट रिएक्शन? It was very like freezing moment. No words can explain it. Actually, it was really a beautiful moment. ओके, नाइस। एक्चुअली मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों को पूजा से एक ईमेल आया था जहां पे इन्होंने मेंशन किया कि इन्होंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान बुक्सटावा वीडियोस को एक्सेसिवली यूज किया था। और कमाल की बात यह है कि इस ईमेल के अंदर एक अटैचमेंट था जहां पर पूजा ने इस चीज को मेंशन किया था। बेसिकली उसमें एक कमेंट है जो पूजा ने अपनी प्रिपरेशन के दौरान बुक्सटावा की एक वीडियो के नीचे लिखा हुआ था। और वहां पर पूजा ने लिखा है कि जब वो यूपीएससी को क्रैक करेंगी तो उस दिन वो बुक्सटावा चैनल को रिकमेंड करेंगी। सो आई एम सो हैप्पी कि आपने जो चीज सोची उसको करके दिखाया। सो इट इज वेरी वंडरफुल फीलिंग टू हैव यू राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ अस। Thank you, sir. This means a lot because during my preparation, Bookstava was my major friend. So I wanted to genuinely give back to it because the videos are of very high quality. And often during preparation, we feel so frustrated because notes reading and all is so monotonous. But Bookstava gave an escape route. So it's very happy to share that during my breakfast, during my lunch, and even during free times I used to watch books. It was both entertainment as well as learning. So I somewhere had very strong intention in mind that since I've made complete use of Bookstava, I have to make this reach to 100 more people like me. So that was my intention behind that particular comment. सो पूजा, आप बताना चाहेंगी एस्पिरेंट्स को कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी जब आप प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन कर रही थी? तो क्या आपने प्रीलिम्स और मेंस को सेपरेट रखा था या फिर आपने वो एक कंबाइंड अप्रोच को यूज किया उसके Hmm. लिए? सर एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा पहला अटेम्प्ट प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था. सो एज सून एज प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो मैंने बैठ के एक पेज में सारे जो मिस्टेक्स हैं उसको निकाले थे. फॉर एग्जांपल मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ठीक से नहीं देखा था, उसको रिवाइज नहीं किया था. सो ये मिस्टेक्स पहले मैंने आइडेंटिफाई किया, देन आई स्टार्टेड वर्किंग. तो मेरा जो प्रीलिम्स एंड मेंस का, आई यूज टू रीड इन 80:20 रेशियो. जब प्रीलिम्स पास में था तो 80:20 रेशियो, 80% फोकस ऑन प्रीलिम्स. सो जब मेंस का तैयारी चल रहा था, फॉर एग्जांपल अभी जिन लोगों का हुआ है दे हैव टू फोकस एंटायरली ऑन मेंस. जिन लोगों का नहीं हो सकता है या दोज हु आर गिवन 2024 अटेम्प्ट, दे कैन अडॉप्ट दिस 60:40 रेशियो. 60% फोकस ऑन मेंस एंड बाकी जो रिमेनिंग 40% फोकस ऑन प्रीलिम्स, एटलीस्ट टिल दिसंबर और जनवरी. देन वी कैन चेंज द रेशियो. सो मेरा भी कम से कम कंबाइंड अप्रोच था. बट वेन एवर द एग्जाम यूज टू बी नियर, I used to change this ratio and shift towards one focus. So combined focus था, but depending on the time, I used to modulate it. So ओके। सो आपने घर पे रह के अपनी प्रिपरेशन की थी या फिर इट वाज अ सेल्फ स्टडी और यू हैव अटेंडेड सम कोचिंग फॉर दिस? yes sir. सर मैंने पूरा घर से तैयारी किया. इट इज कम्प्लीटली सेल्फ स्टडी बिकॉज जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मेरा मन में बहुत स्ट्रांगली था कि मुझे खुद करना है. ओनली व्हेन आई डोंट क्लियर और व्हेन आई फील मैं कम्प्लीटली स्टक हो गई हूँ, या तब मुझे कोचिंग का देखना है. बट आई हैड अ वेरी स्ट्रांग मोटिव दैट मैं मुझे खुद करना है बिकॉज आई वांट टू जस्ट मेक ए पॉइंट हियर दैट हम सब में एक पोटेंशियल होता है. हम बिना उसको चेक किए, बिना उसका देख के बिना असेस करके, it's not a good thing to go directly to coaching because we have been reading this subject not in depth but in some point of our life. So first we have to self assess ourselves. कोचिंग कभी कभी डायरेक्शन देता है, बट इन माय प्रिपरेशन आई डिड एंटायरली बाय माई सेल्फ, बट आई डिड नॉट फील कि कुछ कमी है. ओके। यस. और आपकी नोट मेकिंग का क्या, आपने कुछ स्पेशल चीजें की नोट मेकिंग से रिलेटेड या फिर इट वाज लाइक थ्रू बुक्स यू आर अंडरलाइनिंग एंड मार्किंग समथिंग ओवर देयर, और या फिर आपने कुछ नोट्स स्पेशली बनाए थे? यस सर, मैंने नोट्स थोड़ा ज्यादा ही बनाए थे. एंड मैंने मेरा जो नोट्स का तरीका था वो शॉर्ट नोट्स एंड वेरी क्रिस्प नोट्स.
प्रीलिम्स का मेरा अलग तरीके से होता था और मेंस का अलग। स्पीकिंग अबाउट प्रीलिम्स पर्टिकुलरली, मैंने कुछ एक नोटबुक में दो दो शीट्स हर टॉपिक के लिए ब्लैंक छोड़ा था। फॉर एग्जांपल जियोग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, लाइक दैट। तो जब भी न्यूज़पेपर में कोई भी इस टॉपिक से आता था तो आई वुड पुट इट डाउन। सो बाय द एंड ऑफ द ईयर आई हैड अराउंड 10 शीट्स ऑफ कंप्लीट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स का हो गया। रिगार्डिंग द स्टैटिक पोर्शन, मैंने फॉर हिस्ट्री आई फॉलोड अ टाइमलाइन अप्रोच, that is from almost from paleolithic age then till modern history. I first wrote down timeline of important, for example Indus Valley ka timeline, next comes the Janapada timeline, then Mauryan. So in बीच में जो important चीजें हुए थे सिर्फ उसको note down किया था. So it was a very crisp note. There are some important terms, important coin name or places name. So in timeline का बीच में वो उसको लिखा था. पॉलिटी आई रेफर्ड लक्ष्मीकांत इटसेल्फ, उसको उस पे ऊपर बहुत सारे मार्किंग्स हैं, उसको मैंने बहुत बार पढ़ा। हर बार जब मैं पढ़ती थी मुझे कुछ तो नया दिखता था। सो लक्ष्मीकांत वी हैव टू रीड इट मल्टीपल टाइम। सो इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। सो नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाउ मच वी डू एंड व्हाट टाइप ऑफ नोट्स वी डू मैटर्स अ लॉट। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट के लिए कुछ टर्म्स है, उसका डेफिनेशन, दैट is enough. And any new event that is happening, for example recently there was a heat wave, उसका definition चाहिए, that might not be in a note. So इसको ऐसा add up करते जा रही थी मैं for prelims notes. For mains I followed a framework based notes. I used to pick up previous year question paper. For example if the question is regarding separation of power, जितना हमको एग्जाम हॉल में चाहिए उतना ही मैं नोट्स बनाती थी। and my notes would be holistic as well. For example if it is a separation of power, I would write it articles, उसका benefits क्या है, अभी उसको कैसे improvise करना है, case study क्या है, if there are many case study, for example it might be utilized in a proper manner, separation of power is often violated. So as a case study, so in a page or two I would note down in a framework page. So my notes would be like this. I relied on my own notes. Somewhere it provided me confidence as well, and I could also remember them faster. ओके, सो अगर जो लोग यहाँ पर अभी बुक्सतावा की वीडियोस को भी फॉलो कर रहे हैं फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, उनको आप क्या अप्रोच सजेस्ट करेंगी? उनको बुक के Yes, साथ sir. कैसे कंबाइन करना है या फिर नोट्स के साथ कैसे कंबाइन करना है? वो अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो आप एक बार लोगों को बताइए। Yes, sir. So मेरा स्पीकिंग इस पर्टिकुलरली अबाउट बुक्स तवा। सो मैंने कुछ टाइमलाइन जैसे बनाया था हिस्ट्री के लिए। सो आई यूज टू रीड दिस टाइमलाइन, देन एक बार मैं बुक्स तवा वीडियो देखती थी। सो वॉट एवर वेन एवर आई यूज टू वॉच द वीडियोस आई कुड रिमेंबर माई टाइमलाइन वंस अगेन। So also your videos are in a very very well arranged manner. You have started, you have arranged it quite beautifully. For example, all the Mysore wars are on one side, Anglo wars are one side, एंड यू हैव सेपरेटेड जो एजुकेशन पे वीडियोस है वो सारे आपने अलग से प्लेलिस्ट किया। सो फर्स्ट आई वुड रीड माय टाइमलाइन, देन आई वुड वॉच बुक्स तवा वीडियो। सो वंस इन अ मंथ और लाइक दैट आई यूज्ड टू वॉच। बहुत बार देखा है, प्लेलिस्ट पूरा खत्म भी किया है। तो इट शुड बी कंबाइंड अप्रोच, बिकॉज ऑफन व्हाट हैपेंस, वीडियो देख के लगता है कि अंदर जा रहा है, बट वी ऑल्सो नीड टू हैव इट ऑन ए रिटर्न मैनर. So only for that thing, that purpose, I used to follow both the approach, that is notes plus videos. यस, एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कमेंट रहता है कि क्या ये वीडियोस इनफ हैं कि नहीं। तो मैं लोगों को Yes, ये sir. बताना चाहता हूँ इस इंटरव्यू के थ्रू कि अगर आप वीडियोस को फॉलो कर भी रहे हो तो ऐसा मत कीजिए कि पूरी प्लेलिस्ट को एक बार में फिनिश कर, वी आर नॉट कंप्यूटर, राइट? Yes, exactly. एक पेन ड्राइव लगा के हम पूरे के पूरे डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। हमें अगर उसे कंसोलिडेट करना है तो आपको छोटे छोटे कुछ वीडियोस देखने के बाद गैप्स लेने होंगे और उस गैप के बाद उसमें कंसोलिडेट करने की कोशिश करनी होगी। चीजों को लिखिए, नोट्स बनाइए, तब वो आपके दिमाग में ज्यादा देर तक रहेगा। हालांकि हमारी कोशिश ये रहती है कि उसके अंदर कुछ कुछ इस तरह का कंटेंट डालें ताकि उसकी रिकॉल वैल्यू थोड़ी ज्यादा रहे, लेकिन जब तक आप लिखोगे नहीं, उस चीज को एक बार बुक से पढ़ोगे नहीं, वो कॉन्क्रीट नहीं हो पाएगा आपकी मेमोरी में। Yes. एम आई So, राइट? yes, sir, very true. Retention is very important. यस, Bookstava video helps us in understanding the subject and knowing it very, very well. But if we are not able to retain it, then it will be waste. यस, We can either, I used to note down from your videos as well. For example, I still remember what is the first instance that I found out your channel. मुझे मतलब ये जो एक्ट्स है, चार्टर एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये सारे मतलब सोचने में बहुत मुश्किल लगता था. But I could not remember them well. So one day I searched randomly and I got your channel, and I really like the way you have divided it, because
किसी ने बुक्स का वीडियो की तरह डिवाइड नहीं किया। फॉर एग्जांपल आपने डिवाइड किया एडमिनिस्ट्रेशन टाइप, क्या चेंजेस हुए थे, इकोनॉमिक, देयर फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन इंडिया, वो क्या हुआ था, टेरिटोरियल पोजीशन। सो व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग योर वीडियोस आई फेल्ट this is a point where I should note down also. So we have to find out कि किस कहाँ पे notes चाहिए, because Anglo wars and all, in already in other books it is quite elaborately given, but in some of the content we have to retain. So for that, notes is very important. Like I suggest taking notes from your videos as well. I did take down from your videos, sir. Okay, perfect. And what was your approach for current affairs? Yes, sir. So for current affairs, I went through Hindu. So मेरा ये था कि that's what, but like I told, I divided the topics: international affairs, geography, economy. So whenever I came across any terms or topics, for example, recently there was some issue that WTO was filing a case against India. So this is somewhere related to the structure of WTO, or maybe they might ask about MSP or the arrangement. So I would note it down. And there are many terms, especially now UPSC is asking a lot term based questions that are very hard to pronounce as well. So Hmm. I would segregate. So I started my current affairs through segregation. So along with that, like सारे जो aspirants करते हैं वैसे ही मैंने भी monthly magazines पढ़े। इसके साथ मैंने और एक एक्स्ट्रा किया कि मैंने इंडिया का मैप उठाए थे, बहुत सारे इंडिया का मैप प्रिंट आउट लिया था, बिकॉज देर आर मेनी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीशीज आर इन न्यूज, Hmm. नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर न्यूज, प्लेसेस आर इन न्यूज। इसको भी मैंने डिवीजन किया था, लाइक वन मैप entirely for species and one map entirely for national park and wildlife sanctuary. And for example, if Bandipur is in news, tiger is since project tiger, Bandipur was in news. So I used to write Bandipur in Karnataka, inside the Karnataka. So Hmm. जब भी मुझे बोर लगता था मैं मैप्स उठा के पढ़ती थी. One is it breaks monotony. Hmm. Second is that when we are reading like this, somewhere in mind we know, okay, this is in southern side, so I can eliminate the northern states. So Okay. this map based approach भी मैंने follow किया था Hmm. for Okay. current affairs. Okay. And what was your optional? So my optional is sociology. Okay. So, Miss, what was the reason for choosing this optional? First is that I am a very enthusiastic learner. I wanted to read a new subject. That is, and I was intrigued by the syllabus of sociology. That was very interesting to me. And when I did some little assessment, I realized that sociology is good, little bit small syllabus, comparatively well scoring, and there is a scope for inculcating our own style in sociology. So these were some of the reasons, and as I started the syllabus, I developed a passion for the subject as well. Again, in sociology, I started relating to news affairs. Hmm. One task that I did was that every alternative day I used to read the syllabus of sociology. Okay. After reading the syllabus, I used to pick up the newspaper. So जो syllabus में topic होता था newspaper में, I could find out it. I developed that eye. For example, अभी caste reservation का कुछ चल रहा है, minority commission का कुछ चल रहा है. So when I used to read them, I immediately used to note it down that this can go into this particular topics example. ये case study बन सकता है. So my morning task was that reading the syllabus, then reading the newspaper. So Okay. when I started linking with current affairs, the subject became more easy. Nice. Nice approach. Okay. Yes, sir. And आपने इस प्रिपरेशन के दौरान अपना टाइम मैनेजमेंट किस तरह से किया है? मतलब Yes, sir. प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, या फिर आंसर Mhm. राइटिंग के लिए, मतलब किस तरह का टाइम मैनेजमेंट था आपका? Yes, sir. Sir, I was preparing full time for UPSC. So to give respect to that and not to feel guilty, I used to read every day. It's not like I read 12 hours. I am not a early. I didn't wake up early 5 and all. Nor I sat down late. But जो भी डे टाइम मिलता था 9 to 9, उसको यूटिलाइज करती थी. एंड ऐसा दिन भी है जहां मैंने जीरो पढ़ा है, 0 hours पढ़ा है. So हम्म. instead of going on a very rigid timetable, I follow target based approach. मेरा वीकली कुछ टारगेट्स होता था, डेली कुछ टारगेट्स होता था. इफ द टारगेट इज एबल टू कंप्लीट इन 1 hour, वेल एंड if the target is taking 2 hours there, okay, fine. So I never felt disheartened. So this approach I followed, because it is very monotonous task. It takes almost 1 year, so it's very important we have to take breaks as well. So I started putting in a lot of good breaks, like family outings, going out. So mera, instead of a very rigid robotic timetable, I followed target based timetable. So Okay. just again, I want to mention, it's not compulsory that we have to read 10 hours a day, 12 hours a day.
कंसिस्टेंसी इज मस्ट एंड शुड, बट ऐसा भी दिन होता है जहां हमको पढ़ने का मन नहीं होता है, बट इट्स टोटली नॉर्मल। ओके। और आप यूपीएससी के साथ साथ फॉरेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे, आपने रिसेंटली उसका इंटरव्यू भी दिया है। तो इन यस दोनों सर। प्रिपरेशन को आपने साइड बाय साइड किस तरह से मैनेज किया, क्योंकि कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स होंगे उसके लिए जो आप प्रिपेयर कर रही होंगी। Yes, sir. Sir, actually, मेरा forest I did not have it in my picture. In my first attempt, I had not filled it in application. Only in my second attempt, I had filled. So no, I did not do my forest preparation before forest exam. I Okay. did my forest preparation after I was done with my CSE mains exam. That is after September 26 till that 30-40 days gap. I picked up forest. उस टाइम पे भी मुझे सेल्फ डाउट होता था कि मुझसे नहीं होगा कि नहीं. So again, I want to stress we always have potential. The only thing we need to do is one, recognize it, two, believe it. So in these 30 to 35 days, whatever gap was there, I started preparing for forest. My optional was geology and forestry. So Okay. these two subjects I excessively focused on these two. और दो पेपर्स होते हैं, that is GS और English. GS का already हमको practice हो चुका होता है, and Hmm. English का we can manage though it is scoring. So I was focusing a lot on these two. So in this 30 to 40 days gap, I dedicated a little bit more time, so I could do that. I could manage that as well. Okay. Again, sir, that is what self belief. Yeah. ओके, सो अभी आपकी जो पूरी की पूरी यूपीएससी जर्नी है फ्रॉम प्रिपरेशन मोड टू नाउ यू आर सिलेक्टेड ऑलरेडी। सो इस पूरी की पूरी जर्नी को आप अगर मैं आपको बोलूं कि इसका क्रक्स क्या है, एक लाइन में अगर आप बताइए, तो वो Yes, क्रक्स sir. क्या है? Crux is that limited resources, multiple revision, and enjoy what we are doing. Never complain. That is my mantra. Because exam is difficult. That is a fact. हम्म, Because out of almost 5 lakh applicants, they are selecting around 1,000 members. मतलब competition है. ये तो एक fact है. But it should not. It is difficult but not impossible. वो एक हम्म, reality है. When it is difficult, we have to mold ourselves. So this is one that I want to tell. Enjoy what you are doing, because the purpose that we are having is a very good, beautiful purpose. So just believe in that. ओके, हाँ, नाइस। सो Yes, आपसे sir. बात करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को आपकी बातों से काफी सारी चीजें को सीखने का मिला होगा, एंड यू आर एन ऑलरेडी एन इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स। Thank you. Thank you so much for coming to Bookstava and sharing your knowledge with all the people. Yes, sir. Thank you, sir. This means a lot. And once again, thank you for this providing me this platform.